students. In my previous video, I made a promise to you that I'll be teaching you the concept of looping. So here I am. I'm going to tell you about the concepts of. Now, the very first question which strikes in our mind is actually what the looping is. Most of the times I have seen that the students, they are not able to frame a proper loop. आप अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, अगर आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग होना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. So as far as definition which I have written is, a loop is the strongest programming construct of any programming language. Yeah, that's very important. Any programming language doesn't say, I mean, it means कि एनी लैंग्वेज, आप चाहे सी की बात करो, सी प्लस प्लस की बात करो, जावा की बात करो, पाइथन की बात करो, बट कीप इन माइंड दैट शुड बी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू कैन नॉट अप्लाई एनी लूपिंग इन HTML because HTML is not a programming language. So keep in mind you should be very much aware कि if you are working in a programming language, if you are trying to develop your own programs, तो looping का वहाँ पे रोल होगा ही होगा. So you have to be very much clear how actually you are going to frame a loop. Next line says, while programming, when you have to repeat same kind of activities. Students, this actually is the gist or the moral of the story. अगर हम लूपिंग की बात करते हैं तो हम रेपिटेशन की बात करते हैं. बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑथर्स जो हैं, they always say that looping is the iterative statement. Iterative means the one which is going to repeat more than once. Now, what do I mean by repeating same kind of activity? Repetition of same kind of activity means कि आपका जो repetition है उसका nature same है, वो same नहीं है. Now, for example, in my previous video, you all were aware कि you are going to learn something regarding the programming. In my this video, again you know that you are going to learn something about your programming. My next video, again you will be learning something about the programming. But one thing is dead sure कि हर वीडियो का context अलग होगा, हर वीडियो का content अलग होगा, हर वीडियो का objective अलग होगा. But still, I myself is repeating the same kind of activity. I am making the videos, but my topics are different. I give you another example. If I have to print or if you have to print first 10 natural numbers, तो what you are doing, कहाँ पे repetition हो रहा है, same kind of activity क्यों word मैंने बोला, again try to understand. When you are printing first 10 natural numbers, you can visualize on the screen. You are seeing number 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10. तो आप हर बार एक नेचुरल नंबर ही देख रहे हो. यू आर नॉट गेटिंग समथिंग इमेजिनरी, समथिंग एनीथिंग एल्स. यू आर वॉचिंग, यू आर सीइंग, यू आर विजुअलाइजिंग अ नेचुरल नंबर ओनली. एंड उसका भी एक रेंज है 1 से 10. 1 दिखा, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया. तो एवरी टाइम यू कैन सी कि ये चीज 10 टाइम्स हो रही है. नंबर 1, नंबर 2, every time you are getting a natural number. So this is how we are repeating the same kind of activity. नाउ लूप को बहुत सिंपली समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम ये भी कहते हैं कि लूप इज लाइक अ सर्कुलर पाथ. एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसको आप रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन. Now, working of a loop, if we talk about how does a loop work, so for sake of that, I have shown you with the help of flowchart where you can see a rhombus box, and that rhombus box is having a condition. We all know in the flowchart we have a rhombus box and its objective is to check a condition. When you mention a condition, every condition is either true or false. But आप अगर ध्यान से देखोगे, true के केस में यू सी द डायरेक्शन ऑफ द एरोज. वो डायरेक्शन ऑफ द एरोज को अगर आप ध्यान से विजुअलाइज करोगे तो ये एक सर्कल ही बना रहा है. बिकॉज जब जब कंडीशन ट्रू मिलेगा, इट इज रिपीटिंग द सेम पाथ. एंड when the condition is becoming false, only then it is leaving that part. So that repetition part is getting over, or I must say the loop is getting terminated. Now, if you have to understand what are the basic needs of a loop, which is very important, क्योंकि loop को तो समझ लिया कि loop क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ में आया, but loop को कैसे frame करना है, loop के framing के लिए it is important that you should be aware of the needs of a loop. If you are not aware, again confusion रहेगा. So students, I always say that whenever you have to frame a loop, you must be
clear about these 3 points in your mind. Number one, the starting or the first value. I'll explain each and every point in detail. Just have patience. Second is end or the stop value. And third is jump or update. Now, here comes first or the starting value. Conceptually, it is that value from which one wants to start their work. As we all know, a loop means something that has to be repeated a specific number of times. It is very important, students, whenever we are talking about loop. I'm not saying that loop is something which is going to work infinite number of times. So understand the difference. Specific number of times का मतलब है इसको कहीं ना कहीं end होना है, इसका एक proper terminating point आना ही आना है. आपका कोई भी लूप कैसा भी नेचर का हो, it has to end somewhere. Thus it must always have a proper starting value. तो अगर आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू ही नहीं होगी तो एंड वैल्यू को डिसाइड करना मुश्किल होगा. जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए आपने जो विजुअलाइज किया, व्हाट यू सॉ इन फ्रंट ऑफ यू वाज 1. That was the very first value which you are imagining कि आपके सामने 1 आ रहा है स्क्रीन पे, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सबसे पहले 1 को इमेजिन कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग विद दैट वैल्यू 1, देन 2, देन 3, देन 4. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स बताओ, ऐसा प्रोग्राम लिखो जो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करे, तो coincidentally again you will see the very first value on the screen will be 1. That is your starting value. But now in this case your next value will be 3, then 5, then 7, likewise. Fine. So I hope you must have understood first value. Second thing which should be very clear in our mind is end value or the stop value. बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में खुद ही जस्टिफाई कर रहा है. As the name suggests, this value decides the end of the loop statement. In other words, it must be the condition to terminate the loop while writing the program. Yeah. आप जब लूप का कंटेक्स्ट लिखते हो, जब लूप के स्टेटमेंट्स लिखते हो, तो आपके लूपिंग के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच द लूप इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, आफ्टर विच द लूप इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. सो दैट टर्मिनेटिंग पॉइंट, दैट एंड वैल्यू, दैट स्टॉप वैल्यू हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हर केस में एंड वैल्यू सेम नहीं होगी, हर केस में स्टार्टिंग वैल्यू सेम नहीं होगी. For example, if I say you have to print first 20 even numbers. Now first 20 even numbers में your first value which should appear on the screen will be 0 because 0 is also an even number. Then 2, then 4, then 6, then 8, likewise. Your last value should be 38. So this is how you have to decide what should be the first value and what should be the end value. But end value is again very important because end value decides कि इसके बाद मुझे काम नहीं करना, इसके बाद इस लूप का एंड हो जाएगा. जितना इम्पोर्टेंट फर्स्ट वैल्यू को समझना है, जितना इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू को समझना है, उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट है जंप वैल्यू को समझना. लेट्स सी व्हाट इट इज. दिस वैल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ इटरेशंस. या दैट मीन्स कितनी बार आपका लूप काम कर रहा है, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 टाइम, दैट डिपेंड्स आपकी अपडेट वैल्यू पे. दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द लूप will run. If this value is missing, then loop is going to work infinite number of times. That means the loop is never going to stop. Yeah, it is very important student because आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपने समझ लिया, लास्ट वैल्यू आपने समझ लिया, आपको ग्रेजुअली अपनी फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू की तरफ लाना है. यू हैव टू अप्रोच टुवर्ड्स द एंड वैल्यू. सो हाउ यू आर approaching towards the end value, that is important. That is why it is known as jump value. Now jumping normally means कि हम प्लस मतलब इंक्रीज होके जा रहे हैं, बट यहाँ पे what I mean is कि jumping means how you are changing your first value so that it is generating the next value, then the jump value will increase another value, then another value, then another value, and finally it is approaching to the end value and your loop is getting ended. Fine. तो अभी मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट किया था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का. 1 से 10, 1 was extreme initial value, 10 was the last value. 1 से 10 पे आप कैसे आ रहे थे, 1 के बाद 2 आपने विजुअलाइज किया, then 3 किया, then 4 किया, then 5 किया. दैट मीन्स आप +1 करके आ रहे थे. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इवन नंबर्स का.
अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, तो आपके माइंड में, आपके आंखों के सामने जो आउटपुट जनरेट हो रहा था, दैट वाज व्हाट, 0, देन 2, देन 4, देन 6, देन 8, लाइक 38। तो 0 क्या है, फर्स्ट वैल्यू है। 38 क्या है, लास्ट वैल्यू है। लेकिन 0 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, 2 के बाद 4 आ रही है। तो यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, +2 का है। दैट इज व्हाट द जंप वैल्यू इज। एंड ग्रेजुअली आप देख रहे हो 0 से 2 पे आए, 2 से 4 पे आए, 4 से 6 पे आए, 6 पे 8 आए, 8 से ग्रेजुअली यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 38, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन आफ्टर 38 योर लूप विल से, oh, my job is over. So thank you for watching this uh, video, and I hope you must have understood the concept of looping. I must have delivered what I wanted to tell you about the looping. In my next video I will explain the different types of loops which are available in C++, Java, as well as in Python. Thank you. Stay safe, stay healthy.